Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. फहद साहब बड़ा ज़बरदस्त जी एंड एक्सेलेंट. मैंने कहा सेल्स वालों को जवाब दे दिया आपने, सप्लाई चेन वाले जो थोड़ा सा रोते धोते उनको भी जवाब दे दिया, फाइनेंस वाले सॉर्टेड थे ऑलरेडी, एचआर का मैं खुद हूँ, फ़ैन हूँ साहब का मैं. तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं और फिर एआई का कल्चर कैसे बनेगा उसके पॉइंटर्स में हम आपसे अभी बात करेंगे. अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि एआई फ्रेंड है, एनिमी है या फ्यूचर बॉस है? Friend, absolutely. Good. Corporate life or startup hustle, which one gives you more dopamine? Startup hustle. Startups. Very good. अगला सवाल, leadership is in one word. Leadership in one word, inspiring people. Great. One Pakistani founder you would love to collab with. I think Mudassir Sheikha. If AI had a personality, what would it be, introvert or extrovert? Or extrovert. Extrovert. Morning fuel, coffee, mindfulness or chaos? Mindfulness. Good. Your go-to reset habit when life gets overwhelming? Connecting with God. Excellent. Biggest green flag in young talent today? Biggest green flag, consistency and perseverance. मुश्किल से मिल रही है आजकल, but that's really important. फहद साहब बड़ा ज़बरदस्त जी, हम ये जानना चाहेंगे, एआई बज़वर्ड है लोगों के लिए जिनको अभी इसकी अहमियत नहीं पता, लेकिन ये हमारे लिए नीड है, अब लग्जरी नहीं रहा, हम समझ चुके हैं. अगर कोई लोग या कोई कंपनी आपको देख रही हो या आपकी पोस्ट से भी इंस्पायर हो रही हो, वो आपसे कहे कि हम अपनी कंपनी में ये कल्चर बनाना चाहते हैं लेकिन हम समझा नहीं पा रहे, हम बता नहीं पा रहे, आपके पास क्या ऐसी सीक्रेट रेसिपी है इन बुलेट्स 1 2 3 4 कि आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं? वो क्या रेसिपी है प्लीज़ बताएं ताकि लोग एआई का कल्चर आज से अडॉप्ट करना शुरू कर दें. बिल्कुल. सो मैंने एक रोड मैप पे काम किया है एंड ऑब्वियसली दिस हैज़ बीन इवॉल्विंग the more I'm engaging with various organizations of different sizes and industries, right? So what I would say is it has to start with awareness. And the session that we did with your organization as well and various other organizations, tone from the top has to be set because AI is not just an IT project, it's a transformation project. That's why you have to create buy-in from the top. So you start with awareness and training and capacity and capability building from the top. उसके बाद आप वही चीज़ करें at middle management level and and functional level as well, right? And you start creating champions across the organization, जैसे innovation के लिए होते हैं, इसी तरह for AI as well. Then you start focusing on a strategy. Absolutely. And उसमें आप एक sort of consulting mindset से like your roadmap for AI, right? And then after that you start getting into use cases. पहले कुछ use cases पे आप focus करें. Some of these could come out of trainings and workshops as well. Prove the ROI with low-hanging fruit. Build the AI momentum. Build confidence in your organization to invest in AI. Then go for more scalable deployment. And I would highly, highly recommend do not go for high-level investments upfront. पहले check करें आपकी organization की AI readiness. And I can help with that as well. And then obviously then you move towards the fact कि आपने off the shelf applications की तरफ जाना है या you want to go for tailored developments or tools etc, right? So you go for scale later. Capability building, roadmap design, test case for different test cases, start playing with those, proving the ROI and then go for scale. Absolutely. और अगर आपको लोग कहें कि यार फाद भाई हम बहुत सी मुद्दतों से ये बात कर रहे हैं लेकिन हम सेठ को समझा नहीं पा रहे, हम अपने बॉस को नहीं समझा पा रहे, वो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, फाद भाई लेट्स हैव अ कॉफ़ी विद अस, कॉफ़ी पिएं या लंच पे आ जाएं, हमें समझाएं, आप हमारी मदद करें, कैसे सेल्स पिच बनाएं और बॉस को समझाएं. हाउ वुड यू डू दैट और लोग आपको कैसे अप्रोच करें? जी, so people can reach out to me via LinkedIn. You can search for Fahad Jilani there. You can contact me on my mobile number 0321 214 3575. Or you can email me at fahad@fahadjilani.com and yeah, I mean we can get in touch there and would love to meet for coffee. लोग कहेंगे सर आप पहले सेशन के मीटिंग के पैसे तो नहीं लेंगे क्योंकि लोगों को डर है, क्योंकि बहुत अच्छा कोर्स है. once they invest in it and I'm sure they'll invest million in it. पहली मीटिंग आप कॉफ़ी पे, ये सही है? नहीं, कॉफ़ी तो पी लेंगे लोगों के साथ, लेकिन देखिए बात ये है, द वे माशाल्लाह दिस इज पिकिंग अप,
So obviously what happens is your time becomes your biggest asset, right? So 2025 में अभी शायद हम कॉफ़ी के लिए अवेलेबल हैं 2026 में अल्लाह बेहतर जानते हैं बट आई मीन जस्ट जोक्स अपार्ट आई थिंक always up for a coffee with people and obviously exploring the possibilities and then you get into formal engagements. By the way, I do have some very good technical partners with me on board as well for AI solution development and tailored developments. So वो भी एक अलग पूरा game है and I think 26-27 is the year for that. Right now we are only at the starting point of this journey in Pakistan. So pleasure to be sort of leading it and championing the cause in Pakistan. थोड़ा सा आखिरी सवाल का मतलब दायरा ही पूछेंगे. कुछ लोग चाहते हैं हमें आपकी फुल डे ट्रेनिंग नहीं चाहिए, ठीक है, हमें आपकी कंसिस्टेंट आपकी हैमरिंग चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ नीड जैसे आती हैं कि यार आप ऐसा करें, हमें ना 15 दिन का प्लान बना दें जी, और हम चाहते हैं हफ्ते में आपका 3 घंटे का सेशन हो, ये लाइक यूनिवर्सिटी. जी जी जी. ऐसा भी करते हैं. नंबर 1, फुल डे सेशंस भी करते हैं, हाफ डे सेशंस भी करते हैं. और आपकी क्या प्रायोरिटी है ताकि लोग आपको उस नज़रिए से देख के आपको अप्रोच करें? देखिए, so what I'm doing is मैं एक generic off the shelf offering सबको नहीं दे रहा. I've been on the other side where I understand कि क्या requirements होती हैं of every organization and उनके departments की. So I understand that and then I tailor the use cases, the interventions accordingly. So in some cases I am doing online modules for organizations जो जैसे every week we connect for a couple of hours. So remote learning is an option for जिनकी teams ज़रा virtually connect हो रही हैं. Similarly, you could do 2-hour seminars, 3-hour seminars. But what I highly recommend is, and the real game changers are those full day and 2-day interventions जहाँ पे क्योंकि आपको भी अंदाज़ा है we were rushed for time even in one day, right? So what I really like is and what really makes an impact is जहाँ पे आप सिखाते हैं and then you get people to try their hands on things. Absolutely. And this applies even at the director level. जब तक वो खुद AI in action नहीं देखेंगे, they will not convert. And that's where it changes the game. So open to flexible programs. It needs to be the right fit for the right team and the organization, right? So that's what I'm focusing on. ROI is guaranteed because of the strength of the tool. I mean, ये जो AI की nature है, उसकी ROI guaranteed है. I've been on the other side. I always am focusing on generating ROI from any of my training or consulting interventions. Last question from my side is it a project-based learning or just a theoretical program? No, it's a lot. It's hands-on. That's where the game changer is. कुछ चीजें आप बताते हैं, but then it's about getting people to try the hands-on. One of the best and I guess most fulfilling feedbacks I'm getting, and this is from some directors and business owners of some of the largest organizations in Pakistan. They say that one day that we spent together has changed the way of working for us after many decades, right? And obviously जब एक business owner और एक सेठ AI की power देख ले, तो वो फिर उसके बाद there's absolutely no looking back. There's guaranteed no looking back, right? So that's what the focus is on. Thank you very much for all the stuff. Any message for all the viewers? AI आपके लिए क्या कर सकता है? अभी भी वक्त है. AI को adopt कीजिए वरना AI आपको adopt कर लेगा. ये मेरी तरफ से आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? जी, I think similar to that, use AI as the enabler, the augmenter. Stop being a critic. Stop being someone who's just skeptical about it. Balance the opportunities with risks. I'm focusing on responsible AI adoption and enablement. And you know how much time I spend discussing the risks as well when we sit down together. I think that's very important. I would say any organization which thinks कि AI के बारे में बाद में सोचेंगे, what they will come to realize is कि आग को हाथ लगा के ये समझने से बेहतर है कि वो जलाती है. बेहतर ये है कि पहले समझ लें this is too strong, too powerful to ignore. It's got massive benefits but massive risks as well. Let's make sure you're ahead of the curve rather than being behind. Thank you. Excellent. Jilani साहब बहुत ज़बरदस्त थी. I think this is completely packaged for all the people who wish to or who wants to start the AI culture in the organization. Thank you once again. God bless you. Pleasure. Thank you. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.